Let's get started. The next question is, the fourth question which we are going to discuss is, okay, the fourth question is, it's an implementation heavy question. When I say implementation heavy, it means it's not going to take a very big trick or something. It will take a lot of implementation. It will take good amount of code. Okay, so next question is spiral matrix, and it's a medium level problem. So what's this problem saying? Let me tell you. So you are given, listen to this problem very clearly. Okay, so you are given an m cross n matrix. Okay, m cross n matrix has elements like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, so this is an m cross n matrix which is given to you. Now what you have to do is, you can either print, or you can return a vector, whichever way feels good to you. I'll just return a vector, and you have to return it in a certain order, and that order is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Can you see this? This is a particular spiral. So this question mein, we have to return a vector, or we can print this particular in a certain order. I'll return a vector. Can you return this vector in a certain order? So this is the question. Okay, ऐसा समझते हैं कि ये आपका m cross n matrix है. Okay, so and it has some rows and it has some columns. Okay, now what you're going to do is, you create two variables to monitor the rows A and B. Let's say call it Sx and Sy. Okay, yeah, Sa and Sb, whatever, Sx and Sy. And you also calculate two more variables called Sx or Ex, let's say, and Sy and Ey. Okay, so this to maintain the rows and this to maintain the column. Now what you do is, first of all, अपने को पहली row print करनी है. ठीक है, so we'll go to the first row, we'll print this particular row, and ये काम अपना हो गया. ठीक है, so we have done that. What will happen to Sx now? The value of Sx will increase. So सबसे पहले first row print कर दो. Correct? Once you have printed the first row, after that you increase the Sx by 1. Clean? उसके बाद what will happen next is, last column print कर दो. Correct? You print the last column, this particular one, and what will happen? Ey will be reduced to 1. Ey की value यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, so Ey will become Ey minus minus. Similarly, अब ये last row print कर दो. Right? So just print the last row. Last row print हो गई. And what will happen to Ex now? Ex will become Ex minus minus. Okay. And finally, first column print कर दो. First column print कर दो, and column will become Sy plus plus. Correct? यही लॉजिक है ना. अब इसी चीज को अपन लोग कोड के थ्रू करेंगे. तो यहाँ पे 4 लूप्स लग रहे हैं. ठीक है, we are using 4 loop. This is the only logic? No, this is not the only logic, buddy. You can do it using DFS as well. I mean, there are different approaches to solve this problem. एक चीज याद रखो guys, to solve a problem there can be different solutions. ठीक है, I can basically, हम लोग शायद एक problem का एक solution या 2 solution discuss कर सकते हैं, depending because of the constraint of the class time, but it's up to you. ठीक है. Yes, I'll discuss that. Okay, I'll discuss that if time permits. I'll definitely discuss that. ठीक है, let's start. And if you have different approaches, come to different approaches. It's fine. Spiral matrix dot cpp.
Okay, chali, let's get started with the spiral matrix program. So I'm going to create a vector int spiral matrix, and the spiral matrix will contain vector, a vector. Chali, so let's create a vector, which is the result, and the size of the result is going to be how much? Let the number of rows is equals to, which is, I'm going to sx is equals to 0, sy is equals to 0, ex is equals to mat dot size minus 1, and ey is equals to mat 0 dot size minus 1. What will be the size of result? The size of the result is going to be mat dot size, the number of rows, and mat 0 dot size, the number of columns. Okay, so you have the number of rows and number of columns well defined. Okay, now let's get started. And counter, let's take counter as well. Counter is equals to 0. Okay, so while sx is less than equals to sy, जब तक अपनी रो वाले जो दो वेरिएबल से मीट नहीं करते, and sy is less than equals to ey, जब तक इन दोनों में से कंडीशन कोई भी ट्रू है, ठीक है, तब तक अपन क्या करेंगे, अपन 4 लूप्स लिखेंगे. we'll write 4 loops. 4 int I is equals to what? sy. सबसे पहले अपने को पहला वाला रो प्रिंट करना है, राइट? पहला वाला रो प्रिंट करना है, मतलब कॉलम की वैल्यू 0 से लेके sy से लेके ey तक जाएगी. Let's call it j, it makes more sense. J is less than equals to ey and j plus plus. Okay, simple for loop. Result counter is equals to matrix first one is sx, then it's going to be j. Okay, and once you're done, you have to improve the value of counter as well. Now I'm going to increase the sx by 1. Similarly, last the row is going to be the last one, right? And यहाँ पे, and यहाँ पे, what I'll do is you'll reduce the value of ey to 1 minus. Okay. Similarly, I have to write the this function 2 more times, this loop 2 more times, and j is equals to, अब पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है? मैंने सबसे ऊपर वाली रो कर दिया, मैंने सबसे लास्ट वाला कॉलम कर दिया, और मुझे नीचे वाली रो को करना है, और मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? So it's going to be ey j is equals to ey, j is greater than equals to sy, j minus minus. And here again, I did not add the control plus, so I'll just add it here. It will save me 1 line. Okay. Result ctr plus plus is equals to matrix ex, the last row, and the value j. One more thing. Now that I have done that, I'll reduce the value of sy to 1 more. Similarly, एक बार वैसे ही int, अब I को नीचे से स्टार्ट करना है, पहली वाली रो लेनी है, ठीक है? So I is equals to ey ex, my bad. I is greater than equals to sx I plus plus minus minus. Result ctr plus plus is equals to matrix matrix. The first row is going to be I, and the column is going to be sy. Okay, and
makes sx sy plus plus. Okay, but oh my bad. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन छोड़ दिया। वो इफ कंडीशन क्या है, वो अपने को बचाएगी कि कहीं अपन लोग ने कंप्लीट तो नहीं कर दिया पहले से। ठीक है, तो अपने को चेक करना है कि क्या sx इज लेस देन इक्वल्स टू sy है। ये वाली कंडीशन जरूर ex माय बैड, ये कंडीशन अपने को वापस से चेक करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया है, ex and sy is equals to ey। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने आप को वापस यहाँ चेक करनी होगी कि ये कंडीशन वापस से ट्रू बन रही है, तभी अपन लोग ये वाला फॉर लूप लिखेंगे, वरना अपन लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ कोड इज देयर एंड यहाँ पे भी हम लोग ये कंडीशन लिख लेते हैं, sy is less than equals to ey। ठीक है, and I'm going to paste it here and I'm going to format it। ठीक है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या? Just a sec। sy to ey, sx to ex। Oh yes, my bad। sx से ex, sy to ey। यहाँ पे हर चीज चेक कर लो, मतलब इस तरह की कंडीशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जस्ट कीप ऑन चेकिंग। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे तुमको ना डायग्राम्स समझा देता हूँ। ठीक है, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो सपोज करते हैं ये अपना कोड है, यहाँ पे वैल्यूज हैं ये। अभी मैं वैल्यूज लिखना नहीं चाह रहा हूँ, सो आई जस्ट राइट दिस। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज योर कोड। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और लास्ट रो को देखो। फर्स्ट रो को मैं sx बोल रहा हूँ, लास्ट रो को मैं एंड x बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग x, एंडिंग x, स्टार्टिंग y, एंडिंग y। ठीक है, ending it's basically m minus 1, it's equals to n minus 1। okay, number of rows minus 1, number of columns minus 1। अब जब मैं पहला वाला रो प्रिंट करूंगा तो मुझे फॉर लूप किस पे लगाना है? मुझे sy के ऊपर फॉर लूप लगाना है जो ey तक जाए। करेक्ट, ये चीज क्लियर है? द फर्स्ट टाइम यू राइट दिस यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर रो। करेक्ट, so your loop will go from sy to ey। okay, clean, that's clean। so your first loop is going to be from sy to ey। next, once you're done that, the value of sx, the first row you have already done, so in that case what will happen? sx will become sx plus 1, so sx is now pointing here। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अब अपने को ये लास्ट वाला कॉलम प्रिंट करना है। ठीक है, सो अब अपना कोड कहां से कहां तक जाएगा? फ्रॉम sx to ex। करेक्ट, फ्रॉम sx to ex। so this code will move from sx to ex and the value of y will remain ey। so this is going to be from sx to ex and the value of y will remain this। so हम लोग ये बेसिकली एक्सेस करना चाहते हैं, mat sx to ex and the value of ey remains the same। cool, जब ये वाला काम हो जाएगा तो what will be the value of ey? ey की वैल्यू एक कम हो जाएगी, राइट? ey will come here। so अब ey यहां पे पॉइंट करेगा। अब अपन लोग वापस अगले लूप से स्टार्ट करेंगे, which is this one। ठीक है, इस केस में हम लोग ey से लेके sy तक जाएंगे, वैल्यू डिक्रीज करते हुए, ey टू sy वैल्यू डिक्रीज करते हुए। ये अपनी रो कॉलम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, रो की वैल्यू क्या रहेगी? ex। सो हुआ क्या यहाँ पे भी, अगर मैं इन कंडीशंस को नहीं लिखता तो मेरी ex की वैल्यू -1 हो जाएगी। मुझे लगा ex की वैल्यू 0 रहेगी, बट नो, ex की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये while लूप चलेगा ही नहीं। करेक्ट, और ये while लूप नहीं चलेगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। In case sometimes it happens that your code is not able to handle a particular test case, particular edge case, particular corner case, make sure कि इसको ऊपर लिख दो। ठीक है, जब आप हम लोग ड्राई रन कर रहे होंगे ना इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू को फाइनल कोड देने से पहले, तब अपन लोग ये काम करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, it's 8 o'clock। I think I'm thinking of one more question। okay,